मैंने आपके साथ कुछ एनसीईआरटीज शेयर की हैं. ओके, सो एनसीईआरटी +1 +2 एज वेल एज रमेश सिंह, ये 3 किताबें मैंने आपके साथ शेयर की हैं. बट शेयर करने के लिए का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको वो पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है. ये आपके इंटरेस्ट के लिए शेयर किए कि आप चाहो तो पढ़ सकते हो. पढ़ना आपको इवेंचुअली क्या है, जो क्लास में नोट्स बनाएंगे बस वही, और उसके एड ऑन में कुछ अगर करंट अफेयर में आ रहा है तो वो हमें यूजफुल है. ठीक है, सो जस्ट फोकस अपॉन योर क्लास नोट्स एंड करंट अफेयर्स, दैट शुड डू फॉर योर इंडियन इकोनॉमी. अब इकोनॉमी को पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में क्या क्या, थोड़ा सा इसको समझते हैं. सो फर्स्ट ऑफ, हमारे कोई टेक्निकल इकोनॉमी नहीं है. लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड. सी देयर इज वन subject of economics, okay, and then whatever you study as a theory in economics, the same gets applied in some contextual setting, then it is called economy. थ्योरी की एप्लीकेशन को इकोनॉमी बोलते हैं. ठीक है, अब आपके सिलेबस में है इंडियन इकोनॉमी, तो कहने का मतलब एक कॉन्टेक्चुअल सेटिंग यूपीएससी ने दे रखी है, दैट इज आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस को लगा के देखना है, फिर बनेगा इंडियन इकोनॉमी. ओके, नाउ होप दैट इज क्लियर नाउ. अब हमारे सिलेबस में है क्या क्या, यूपीएससी क्या अपेक्षा करता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर. तो टोटल सिलेबस के अंदर वी गॉट थिंग्स लाइक नेशनल इनकम, ये एक पहला चैप्टर है. ठीक है, लेकिन इससे पढ़ने से पहले कुछ जीरो लेवल पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है, उसको वर्कआउट करना पड़ेगा. ठीक है, देन दूसरा नंबर पे हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप लिख लीजिए, ये सब कंटेंट्स जो हमारे पास हैं सिलेबस के अंदर. तीसरे नंबर पे द थिंग दैट वी हैव टू डील विद इज मॉनेटरी सिस्टम. मॉनेटरी सिस्टम, ओके, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, ये वाली सारी चीजें, आरबीआई, सेंट्रल बैंक एंड एवरीथिंग विल कम. फोर्थ इज द फाइनेंशियल सिस्टम. फाइनेंशियल सिस्टम, फिफ्थ फाइनेंशियल सिस्टम में जैसे बैंकिंग या हमारी कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट्स. फिफ्थ इज द फिस्कल सिस्टम, दैट इज द गवर्नमेंट बजट or anything related to the government's expenditure or revenue policy. Sixth topic for us is after fiscal system planning. Okay. Seventh topic for us is poverty and unemployment, गरीबी और बेरोजगारी. Then eighth topic for us is agriculture. Ninth is industry and infrastructure. 10th topic for us is services sector. And 11th topic for us is the external sector. इनमें से सबसे ब्लीक टॉपिक सर्विसेज सेक्टर है, क्योंकि इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी, आप जो इससे पहले क्लासेस हुई हैं, जो यूट्यूब पे भी लेक्चर्स हैं, तो उसके ऊपर वर्कआउट किया था. इधर भी थोड़ा सा बेसिक वर्कआउट करेंगे. ओके, सो दीज आर ऑल द वेरियस टॉपिक्स और थीम्स दैट वी हैव टू कवर इन इंडियन इकोनॉमी. नाउ व्हाइल कवरिंग दिस थीम्स, जो देखा गया है पिछले कुछ सालों के अंदर ट्रेंड, वो क्या है, लेट मी शेयर दैट आल्सो विद यू. प्रीलिम्स के अंदर आपको आम तौर पे कम से कम 15 और कभी कभी 20 क्वेश्चंस भी इकोनॉमी में से मिलते हैं. ये क्वेश्चंस ज्यादातर आपके पहले 7-8 चैप्टर जो हैं, दैट इज अप टू फिस्कल सिस्टम और प्लानिंग और पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वहां तक आएंगे. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सटर्नल सेक्टर, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये मेंस में ओरिएंटेशन ज्यादा रहती है इनकी. ठीक है, पहले वाले टॉपिक्स की प्रीलिम्स की ओरिएंटेशन ज्यादा है. मेंस में जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, दे फिगर आउट इन जीएस पेपर 1 इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये जो आपके दो टॉपिक्स हैं, ये आपके जीएस पेपर 1 में भी काम आएंगे. ठीक है, क्योंकि वहां पे मेंस में ये टॉपिक्स मेंशन्ड है. जीएस पेपर 2 में जो
आप ये अगेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लस प्लानिंग प्लस एक्सटर्नल सेक्टर, यहां से आपके टॉपिक्स हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आते हैं। लेट्स से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लेंगे एक्सटर्नल सेक्टर में से, प्लानिंग के बारे में इन जनरल पॉलिसी पूछ लेंगे गवर्नमेंट की क्या चल रही है, नीति आयोग एंड सो ऑन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके क्या गवर्नमेंट कार्यक्रम कर रहा है, लेटेस्ट स्कीम्स क्या है, उसका किसी का एनालिसिस पूछ सकते हैं। दैट कम्स इन जीएस पेपर 2। Generally, you will find two questions here. That will be about 30 marks. Another two questions here. Again, 30 marks, 15 marks each. Then GS paper 3, this has a dedicated section of economy, which is 125 marks always. Fixed है. तो आपके करीब 8-10 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे पक्के तौर पे, और 125 मार्क्स का यहाँ पे इकोनॉमी का सेक्शन आता ही आता है। कभी कभी बढ़ के ये इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, प्लस में जाएगा, लेकिन कम कभी नहीं जाएगा। GS paper 4 is not related to Indian economy much, but the vocabulary that you will develop with growth and development, poverty and unemployment, sustainable development, inclusive growth, वो आपको कभी कभी कुछ केस स्टडीज हल करने में जरूर हेल्प करेगा। So just in case of case studies, GS paper 4, you may use the economic vocabulary as well, और things like cost benefit analysis, इस तरह से आप उस एंगल के ऊपर भी एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। जो डेटा आपके पास इकोनॉमी से मिलेगा, जो आपने इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस में भी इससे पहले देखा, तो वो डेटा भी आप अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए साथ में बता सकते हो। ठीक है, सो दैट कैन बी डन हियर आल्सो। ओके, नाउ दिस इज द ओवरऑल वेटेज। सो दिस इंप्लाइज कि अगर देखिए 100 में से मेरे 15 से 20 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में से आ रहे हैं, दैट मीन्स वो 1/5 के आसपास जो है वेटेज अगर वो कैरी कर रहा है, then it's a critical subject. Okay, so that's the situation with economy. Now it's very simple. Generally people have a misconception कि economy पढ़ने के लिए पता नहीं क्या ही चाहिए. It's very simple. I came to the economics field with the zero background knowledge of economics, though there was an interest. So based just upon my interest, अभी इतने साल हो गए इकोनॉमी पढ़ाते पढ़ाते, अब किताब की भी जरूरत नहीं, कोई नोट्स की जरूरत नहीं, ऐसे ही चलता है फ्लो में। ठीक है, खैर अभी इसको पढ़ने का तरीका क्या है, आप जब अपने लेवल पे अब इसको शुरू करेंगे, तो जो एनसीईआरटी +1 मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो स्टार्ट रीडिंग दैट बुक फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। डोंट थिंक दैट आई हैव टू रिमेंबर एनीथिंग आउट ऑफ इट। कोई उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। It is only, giving you an idea about Indian economy, a very brief idea. It will tell you about कि किस तरह के इकोनॉमिक हालात कंट्री के रहे जब वो देश आजाद हुआ। ठीक, फिर धीरे धीरे हमने किस तरह से प्लानिंग की, फिर प्लानिंग के थ्रू कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मॉडल्स हमने क्रिएट किए, उन मॉडल्स में से क्या वर्कआउट पॉसिबली हम कर पाए, इस तरह की चीजें हैं उसके अंदर। सो इट इज इंटरेस्टिंग टू रीड एंड यू शुड कीप अ reader's point of view only. Don't try and mug up things, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सीधा ये एनसीईआरटी में से ही मेरे को क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, एंड इन एनी केस जब भी आप बुक रीडिंग करते हो, बुक रीडिंग हमेशा इस मैनिफेस्ट से करो कि दिस इज टू क्रिएट माई इंटरेस्ट इन द टॉपिक, इट इज नॉट टू बी क्रैम्ड। ओके, because when you think like this that the book is to be crammed, then it becomes an exercise in itself, very difficult. Let me show you what all you have to go through in case of NCERT +1 first, क्योंकि ये आप अपने आप पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया अभी मैं दे रहा हूँ। This is NCERT +1. Just skipping to the content. See, Indian economy at the eve of independence. तो शुरुआती दौर में हमारी इकोनॉमी का क्या हाल है 1947 के टाइम पे। तो क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे देश लूटने आए थे, लूट के चले गए, तो इस वजह से low level of economic development under the colonial rule that was there. And at that time ना तो हमारे पास खाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर से सफिशिएंट फूड सिक्योरिटी था, इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी there was a concern because we were only producing things that were with a very obsolete technology, and largely we had cotton and jute textile mills and little bit of rail coach factories. That's that in the name of industry. There were no capital goods industry, no basic industry, nothing.
फॉरेन ट्रेड के नाम पे इंडिया एक इंपोर्टर था नेट, तो आज भी इंपोर्टर ही है। कोई एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी तभी बनती है जब आपकी इंडस्ट्री स्ट्रांग हो। डेमोग्राफिक कंडीशंस में ये बताया जाता है कि पॉपुलेशन के क्या हालात हैं। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन की स्थिति है वो 1980s में एकदम से डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन पॉपुलेशन का होता है, बिकॉज बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है, थोड़ी सी खाने पीने की व्यवस्था ठीक हो जाती है देश के अंदर। There is a population explosion, and that puts a certain kind of pressure upon the state also in terms of provision of goods and services. So that is given in this chapter. Then occupational structure talks about कि लोग क्या काम करते हैं, खेती बाड़ी में कितने हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, what is the division. So presently, even today, half of the population in India is working in agriculture only. The rest of the half is in industry and services. Back in the day, in 40s and 50s and 60s, we had quite a lot of population, let's say 70-80% working in agriculture at that point of time. At the eve of independence, about 90% working in agriculture. This was the kind of situation. And we'll understand अभी क्लास लेक्चर के टाइम पे कि जब एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे वैल्यू एडिशन कंपैरेटिवली कम है इंडस्ट्री या सर्विसेज से। आप सिंपल सा ही एक एग्जांपल ले लीजिए, कनक जो है, बेसिक व्हीट, that is cheaper as compared to bread, which will be then made in a food processing industry, and bread is cheaper as compared to a sandwich, which will be available in a restaurant. That is a services sector. ठीक है, तो जैसे जैसे हम व्हीट से ब्रेड से सैंडविच की तरफ गए तो वैल्यू एडिशन होता गया। अब इसी वैल्यू एडिशन के बेसिस पे काम कम हो जाएगा और पैसा ज्यादा कमाएंगे। ठीक, अब अगर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो देश की हालत क्या होगी, ये सिचुएशन है। ओके, बट बिना व्हीट के ब्रेड भी नहीं होती, ये भी याद रखना। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू पॉइंट ऑफ चैप्टर 1 दैट यू शुड गो अबाउट। ओके, देन इंडियन इकोनॉमी गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। सो 1950 से लेके 1990, मतलब प्री लिबरलाइजेशन पीरियड में हम क्या करना चाहते थे देश के साथ, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में, what were our goals, what did the country wanted to achieve. So that is given here. Okay, so generally the goals are very basic. We wanted poverty alleviation, we wanted to increase employment, we wanted to give people better access to goods and services, better capability to explore new opportunities. So all these things we wanted. So with that in mind, we went forward and kept on planning. Various kinds of plans came. Okay, then comes the time of economic reforms, liberalization, privatization, globalization, 1991. So here, the country had a situation कि हमारा foreign exchange reserves खत्म हो रहे थे, because India import कर रहा है, तो ultimately जब आप किसी देश से कुछ खरीदोगे, let's say I am buying from USA, then I have to pay them in US dollars. If I'm buying from Australia, I have to pay them in Australian dollars or any other currency if they accept. So generally it is the hard currencies like US dollar, which have a good amount of demand worldwide. They are the ones that are accepted most. तो इन करेंसीज के ऊपर वर्कआउट हुआ, और हमारा जो ट्रेड था वो क्योंकि इंपोर्ट ही इंपोर्ट करते रहेंगे तो अल्टीमेटली ये करेंसीज भी कम हो जाएंगी। तो इंडिया की सिचुएशन ये हुई कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज या करेंसी जो है वो इतनी कम रह गई कि अगले 15 दिन के बाद हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति तक हम पहुंच गए। That was the background. That's why we had to go for liberalization, privatization, globalization. We'll understand this more in the chapter on industry, because in industrial policy 1991, these were the major changes that we did. Okay. Now, as far as the reforms are concerned, what all was done? Then there is a chapter on poverty. So who is poor in India? तो उसकी identification के ऊपर बहुत बड़ा debate है. Then there is a human capital formation. तो यूपीएससी प्रीलिम्स में सीधा ही क्वेश्चन आया था 2015 के अंदर, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, होता क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। देन व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चर, मार्केट सिस्टम, ये सब रूरल डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। देन एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। तो ऑल दीज आर द इश्यूज दैट आर कंटिन्यूड इवन टिल टुडे in India, because Indian labor is even today around 91% working in informal sector, in the unorganized sector. Therefore, their employment is always challenged. Okay, so that is a concern here.
Then infrastructure. Now this has been a major concern for India, because if you don't have sufficient amount of infrastructure, let's say to start with very basic thing, if you don't have sufficient energy or electricity, how can you produce steel even if you have iron ore? How can you produce aluminium even if you have bauxite or alumina? That is, at the resource level, natural resources are there, but your potential or capability are two different things because of the lack of infrastructure. The potential exists, but the capability to extract that much potential or be able to utilize that potential is very difficult because of the lack of infrastructure. So this is another chapter that we'll talk about it. So my suggestion to you is start with chapter 1 today, okay? Slowly and slenderly, and then keep moving along जैसे जैसे हम यहाँ पे अपने चैप्टर्स पढ़ते चले जाएंगे. इसको रोज कोशिश करो कि एनसीईआरटी में से 10 पेज रोज के पढ़ने. 10 पेज रोज के पढ़ते पढ़ते आप इसको वर्कआउट कर लोगे, ठीक है? अगर ज्यादा पढ़ पाओ तो there is nothing bad, like it takes me 1 day to read it, but everybody has different pace. Not if not the ideal pace, then at least 10 pages का मतलब होता है 1 घंटा लगाओ, पढ़ लो, फिर अगले दिन इस तरह से, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. इससे आपका बेस बनेगा, आपका इंटरेस्ट और क्रिएट होगा. रीड इट लाइक अ नॉवल, डोंट रीड इट लाइक अ टेक्स्ट बुक. फाइन, चलिए अब शुरू करते हैं. इंडियन इकोनॉमी. रेडी विद योर टेक्स्ट बुक्स? Yes, sir. Yes, sir. So the first chapter is introduction and some basic concepts. Introduction and basic concepts. देखिए, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं. What is economics? See, economics is something that we say it's a production, is concerned with production, distribution, consumption, and exchange. Production, distribution, consumption, and exchange of goods and services. Goods and services. So economics के बारे में अगर मैं very basic level पे एक बात कहूँ तो ये है. So it is the science of production, distribution, consumption, and exchange of goods and services. Okay. इसको ये भी कहा जाता है that it is a science of scarcity and choice. The science of scarcity and choice. Why? Because the resources are always limited, and then we have to choose wisely how to allocate that resources towards what you want to produce. Yeah. Let's say, if I talk in terms of resources, first of all, what is the meaning of this word resource? If I say sun is a resource of solar energy, yeah, or he's a very resourceful person. What is the meaning of this term, resource? Oh, sir, it means that having something which is of utility or which can be used. Good. See, resource essentially is user specific. See, he's a very resourceful person because he's very useful for various things. So when we say sun is useful for creation of solar energy, that is why sun is a resource of solar energy. When we think of, usefulness of something, that it is available for a particular purpose, then it is called a resource. Okay. So when we call it a resource, so there is a source and then there is a usage. Based upon the usage, we call it a resource. Sun can also be a resource for light. Sun can also be a resource for heat. Yeah. So based upon the usage, we say it. Now, the resources in the particular situation, a particular country or a particular economy will always be limited. Why they will always be limited? क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जाएगी और हमारी जरूरतें भी बढ़ती जाएंगी. Our needs, population always keeps increasing. So therefore, resources are always scarce and are limited. Now what we need to do is
these limited resources need to be allocated based upon certain cost benefit analysis. Okay, and this is essentially the choice component. Okay? Once you do this, then you can have more resources available to you, and then you can keep allocating them and keep generating more and more resources. That means you can sustainably deal with the scarcity if you make good choices. So this is the situation that economics helps us with. Okay. आगे लिखिए. Economics provides with the theory. Economics provides with the theory to deal with the cost benefit analysis. To deal with the cost benefit analysis, so as to make our choices more sustainable. So as to make our choices more sustainable. Okay. So that's how the cost benefit analysis works out. Okay. अब कुछ बेसिक चीजें थी इकोनॉमिक्स के अंदर जिसके बेसिस पे सारी की सारी इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती थी शुरुआती दौर में. जब ये इकोनॉमिक्स का डिसिप्लिन एज इट इज ग्रो करना शुरू किया तो हम सिर्फ दो चीजें देखते थे, डिमांड, सप्लाई. इकोनॉमिक्स में पहले ये दो तीन चीजों का फर्क होता था. And whenever demand and supply are equal, they were calling it equilibrium. You know, there is a person called Adam Smith. Heard of him? So he's called father of economics. Father of economics. Okay. Now, he basically theorized that when you talk about economics, then there should be liberalism. There should be free market condition, less regulation by the government, and the market should work upon the demand and supply so as to decide कि किस चीज की जरूरत है, उसको कितना बनाना चाहिए, और अपने आप में एक मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता रहेगा उसी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे. ये एक बेसिक सी बात हम पहले किया करते थे. तो इसी वजह से जो ये लिबरल इकोनॉमिस्ट थे, जो फर्स्ट लेवल पे जिन्होंने इकोनॉमी का डिसिप्लिन बिल्ड करना शुरू किया, ये कहते थे दैट देयर शुड बी लीस्ट रेगुलेशन. लिख लीजिए, लीस्ट रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट, मार्केट फ्रीडम. मार्केट फ्रीडम किस चीज में? इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज. मार्केट फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, consumption and exchange. Okay. Then एक इनकी स्टेटमेंट है, the free hand of market will establish equilibrium within the economy. That is, the demand will be equal to supply. That's the meaning of equilibrium. जो लोग मांगेंगे उस हिसाब से अपने आप मार्केट देती रहेगी. अब ये एक सिनेरियो था. अब इस सिनेरियो की जो टेस्टिंग हुई, that continued for a very long period of time. The entire industrial revolution happened. The capitalism grew out of this particular thinking only. कैपिटलिज्म का कंसर्न भी क्या है अगर आप सोचे तो, या कैपिटलिस्ट हम किसको बोलते हैं? पूंजीवादी, है ना हिंदी के अंदर. सो कैपिटलिस्ट अ पर्सन हु इज होल्डिंग कैपिटल, and based upon his holding of capital, he takes the decision where to invest so that the return upon investment is good for him. Yes or no? That is the capitalist. So now this capitalism sort of got its own place in the Indian economy and elsewhere world economy because of this kind of thinking only, and this is called as liberal thinking or liberalism, economic liberalism, or simply liberalism. Okay. Now what happened is, in 1928, there was a Great Depression in USA. Great Depression in USA.
You must have heard of it before also. What is the meaning of this depression? Depression or is basically a concern when an economy demand suddenly drops. Now what happens if a demand drops? Suppose कीजिए कि आपकी कंपनी ने मार्केट में सामान बना के भेजा और कोई खरीदने नहीं आ रहा. There is no demand for what you have created. What will happen to your company now? Whatever products you created, you will go bankrupt. Yeah. Yes, sir. Obviously, you will have a slump in growth. Would you then want to create more supply? No, sir. No. So the supply will also drop. And since the supply will also drop, you don't want to create more supply. Do you need people working for you? No, sir. No. तो आपके एम्प्लॉइज को भी आप गेट दिखा दोगे, निकलो यहाँ से, काम करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सामान तो बिक नहीं रहा. So employees will also, the employment will go down. And if the employment goes down, that means people are out of jobs. What will happen to poverty then? Will it go up? Yes, sir. Yes, poverty will go up. And if the poverty goes up, what will happen to the demand? Will people be able to buy new things if the poverty sir. goes up? No. This becomes a mutually reinforcing vicious cycle. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So this becomes a mutually reinforcing vicious cycle. One thing will support the other, and it will continue to go bad. Because of higher poverty, even lesser demand will be there, even lesser supply will happen, more unemployment will take place, more people will go out of jobs and become poor, even more demand shortage. This will continue. This happened during 1928 for about 18 months in USA. Why? Because this was under market only. The state was told not to intervene, and entirely the setup has been governed by the market. So when there is no state and only market, this is the trouble that you go into. This is called the bust phase of the economy. See, within the economy, each business, it goes through a boom and bust. In capitalist economy, this is a normal cycle. It will keep happening from time to time. Okay, just इसकी timeline change होती रहती है, लेकिन ये होता जरूर है. Boom and bust. इसका भी कारण है. क्या कारण हो सकता है? सोच के देखो. Let's say कोई एक नया प्रोडक्ट या कोई नया कंपनी मार्केट में आया, ठीक है. अब क्या हुआ कि उसका प्रोडक्ट बढ़िया बिकना शुरू हुआ. The seller creates a product. The product, I'll give you the example of Apple. So Apple created iPhone as a product. Now iPhone was created, then Nokia also created its phone. Fine. Now there was a situation when Nokia's, as it is sales were 100 times more than the sales of iPhone. That was the situation in the beginning when these two were launched side by side. iPhone version 1. Okay. Now what happened is Nokia never changed its technology from what it was. It was a market leader before coming of Apple. And it said that I will stay with whatever technology is basic, whatever original operating system is there. I will not switch to Android or anything like that. I'll remain what I am. And the way that I'm producing phones, the same way I'll keep on producing them. iPhone essentially was a leap forth in technology, and it gave people a choice to go towards another ecosystem, that is iOS. Okay. Its operating system was different. So now what happened is essentially even the established sellers like Nokia, जिसकी सबसे ज्यादा growth थी, सबसे ज्यादा मतलब उनके प्रोडक्ट ही बिकते थे और हर एक के हाथ में Nokia ही नजर आता था, तो वो खत्म हो गया. There was another player, Samsung. It came out with Android phones. Okay, it also experimented. Already in basic mobile phones, it was giving competition to Nokia, but it was still having only half the market share that Nokia had. Okay.
लेट्स से अगर ये 100 पे परफॉर्म कर रहा है तो ये 50 पे ही था बेसिक मोबाइल फोन के अंदर, लेकिन एंड्रॉयड आने के बाद इसने अडॉप्ट कर लिया। अब आज की डेट में दो ही कंपनीज हैं जो ज्यादा परफॉर्म किए, एक सैमसंग और एक एप्पल। सो दिस नोकिया today is hardly to be seen in the market. It's not even a rival for anybody. Why this happened is it was not able to make a necessary technology shift. The demand or the consumer preference changed while Nokia did not, while other companies did. ठीक है, इसी तरह से अब नोकिया का बिजनेस हुआ बस्ट और इनका बिजनेस हुआ बूम। मार्केट में अगर तो दो प्लेयर्स का बिजनेस बूम हो गया और एक का बस्ट हो गया तो मार्केट ओवरऑल ऊपर ही जा रहा है। लेकिन अगर उल्टा होता है, एक का प्लेयर का बिजनेस चल रहा है और दो का बस्ट हो गया, तो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन नीचे। अभी जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ, आई विल गिव यू एग्जांपल। कंपनीज लाइक रिलायंस, देयर नेट वर्थ ग्रू 3 times during 2019 to 2021 in the 2 years period. Companies like Adani, 4 times. Wipro, again multiple times, their net worth increased. Why? They were able to adapt to the changing situation of the market because of the pandemic. While the mom and pop stores or the normal stores in your neighborhood, they dwindled down. Reason? They were not able to adapt. They were not able to go online as fast, or they were not able to digitize as fast. Same thing happened when GST came along in 2017. What I'm telling you is, whenever there is a change in the situation, that change in the situation will create a scenario. Within that scenario, some people will be able to adjust and some not. अब आप बताओ कि इस फेज के अंदर इकोनॉमी हमारी इंडिया की, डिस्पाइट कुछ कंपनियों ने बहुत जबरदस्त तरक्की की, इकोनॉमी ओवरऑल नीचे गया या ऊपर? सर नीचे गया। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है हमारी मार्केट के अंदर, मॉम एंड पॉप स्टोर, अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी ज्यादा है। This is 90% of our economy. This is 10% of our economy. So even if 10% of economy grew multiple folds, because the 90% went down, the entire economy collapsed. We went into minus growth, negative growth, contraction of the economy. ठीक है? तो उसका कारण क्या है? Most of the players were going down. Now, what was such a situation in USA that it went into a Great Depression in 1928? यूएस के अंदर क्या हुआ? हमारी जो पहली वर्ल्ड वॉर का टाइम है वो है 1914 से लेके 1919 तक का। अब वर्ल्ड वॉर 1 में यूएसए ने पार्टिसिपेट नहीं किया डायरेक्टली, लेकिन इट बिकेम अ सप्लायर टू द कंट्रीज व्हिच वर एट वॉर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1. Since it became a supplier at this point of time, so the industry or the US industry was producing goods and services for the world market, not just the US market. Okay, so there was a huge demand. It was not just catering to what was the economy of USA or the population of USA, it was catering to the nations at war. So it was creating many things. Because of this, in this period, it witnessed huge growth. But then what happened? 1919 तक तो चलो ठीक है, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके बाद इकोनॉमी कर गया स्लैक। ऑब्वियस है, अगर आप बहुत हाई ग्रोथ फेज में जा रहे हो और इस साल उतनी ग्रोथ नहीं की, तो फिर आपकी ग्रोथ नीचे जा रही है। अगर मैं हर साल 10% ग्रोथ कर रहा हूं और इस साल अगर 1% ही ग्रोथ कर पाया, चाहे ये ग्रोथ है, फिर भी पिछले साल के हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्शन है ना? तो ये सिचुएशन आनी शुरू हुई। ये चला करीब करीब 9 साल और ऐसे ही। 1928 आते आते ये सिचुएशन आ गई जो जिसकी हमने अभी बात की कि डिमांड कोलैप्स्ड। बिकॉज द डिमांड कोलैप्स्ड, सप्लाई कोलैप्स्ड, अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंड, पॉवर्टी हैपेंड, फर्दर डिमांड कोलैप्स्ड। ये सिचुएशन 8-9 साल में ये ग्रोथ स्लैकन करते करते नेगेटिव में चला गया। अगर ये एक मैं
जीरो लाइन लूं ग्रोथ के लिए, तो जो ऊपर से स्लैकन करते करते इट बिकेम नेगेटिव, दैट्स व्हेन द इकोनॉमी वेंट इनटू डिप्रेशन, द एंटायर इकोनॉमी वेंट बस्ट. नाउ व्हाट हैपेंड 1928 से 30 के अंदर ये जब हुआ, तो देयर वाज एन इकोनॉमिस्ट कॉल्ड जॉन मेनर्ड कीन्स. ही वाज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट. डोंट वरी, पहले समझ लो आराम से, फिर लिखेंगे भी. ही वाज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट. ही सेड कि भाई अगर तुम सिर्फ मार्केट के हिसाब से छोड़ दोगे, if you just leave it to the market, then it is not going to happen. You will not be coming out of depression. You need an active role by the state or an intervention by the state to now revive the economy or to now revive the demand. Okay. So in this entire cycle, he said that the role of state, लिख लीजिए, role of state in the economy is critical. The free hand of market will strangulate the poor. Strangulate the poor. The state needs to utilize a discretionary fiscal policy. Fiscal policy क्या होता है? ब्रैकेट में लिख लो. The policy governing receipts and expenditures of the government. सरकार को पैसा कहां से आएगा और वो खर्च कैसे करेगी? Receipts and expenditures of the government. Okay. So the state needs to use or utilize a discretionary fiscal policy to revive economy when needed. Okay. तो इस तरह का कुछ एस्पेक्ट भी है. अब ये फिस्कल पॉलिसी में जब हम बोलते हैं ना रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, रिसीप्ट का मतलब होता है कि पैसा आ रहा है आपके पास. इट कंटेन्स टू थिंग्स. इट कैन कंटेन व्हाट यू अर्नड and it can also contain what you borrowed. Yes. What is the way of government's earning? Either the government can earn through public sector enterprises or companies owned by the government. है ना? जैसे पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तो वो जब आपको बिल काट के भेजती है पंजाब में, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो बिजली का बिल जो भी आप भरोगे वो सरकार को पैसा जा रहा है. इसी तरह से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जब कोई उससे स्टील खरीदेगा तो फिर वो पैसा भी सरकार को जाएगा. इट्स लाइक दिस. सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर वन वे ऑफ अर्निंग. सेकंड वे ऑफ अर्निंग फॉर गवर्नमेंट इज टैक्स. सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे द गवर्नमेंट कैन टैक्स whatever you are purchasing or out of whatever you are earning. So through tax also government stands to earn. Then the government can also earn through interest. Let's say पंजाब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले, तो उस लोन को इंटरेस्ट पे ही लेगा, ब्याज पे लेगा. तो दैट इंटरेस्ट देन द पंजाब गवर्नमेंट हैज टू पे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो अनदर वे फॉर अर्निंग of the central government is through interest. So all these are the ways of earning for the government. Okay? Just to give a basic preview. ये तीनों समझ आ गए? तीन तरीके से सरकार पैसे कमा सकती है. रिसीप्ट का मतलब होता है पैसे आ रहे हैं, रिसीव्ड. अब या तो कमा के आएंगे या फिर उधार मांग के आएंगे. सरकार कैसे उधार मांग सकती है? सरकार उधार मांग सकती है या तो बैंकों से, कमर्शियल बैंक्स जिनको हम बोलते हैं, चाहे तो वो सरकारी बैंक हो और चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, या फिर वो उधार मांग सकती है जनता से. कैसे? कोई एक सर्टिफिकेट दे देंगे आपके हाथ में, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, एनी काइंड ऑफ बॉन्ड और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट. उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होगा कि मैं तुम्हारे से इतने पैसे ले रहा हूं, इतने ब्याज समेत तुम्हें इतने सालों बाद वापस करूंगा. जैसे आप LIC की पॉलिसी ले लेते हो,
उसमें भी तो ऐसा ही कुछ होता है ना कि आप इतने पैसे जमा कराओ, इतने साल बाद इतने मिलेंगे, लाइक दिस। ओके, या एफडी करा देते हो सरकारी बैंक में जाके, तो वो भी ऐसा ही होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। सो ऑल ऑफ देम आर अगेन बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। देन अनदर वे द गवर्नमेंट कैन बोरो इज कि वो सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको बोले कि मुझे करेंसी छाप के दे दो, मुझे चाहिए। So that is another way of borrowing. So all these are borrowings. Expenditure गवर्नमेंट किस तरह से करती है? गवर्नमेंट को खुद को चलाने के लिए पैसा चाहिए, इतने सारे लोगों को सैलरीज देनी है ना? सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली लेट्स से सरकार को पैसा चाहिए। फिर गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है ना? लेट्स से अब राफेल जो जेट्स हैं, मल्टी मॉडल कॉम्बैट रोल एयरक्राफ्ट, सो दैट इज व्हाट वी हैव परचेज्ड फ्रॉम फ्रांस। नाउ this is an investment in India's Air Force for a long-term view. Similarly, the government can create roads, the government can create infrastructure, so that kind of investments also the government can do. Moreover, the government can give subsidies or pensions or scholarships. All these जिसके अंदर पैसा सिर्फ देना हो और वापस कुछ भी एक्सपेक्ट ना किया जाए, इनको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। कि तुम्हें दे दिया, बस अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुमसे कोई भी गुड या सर्विस वापस मुझे चाहिए नहीं। तो ब्रैकेट में लिख लो, द मनी गिवन in lieu of which nothing is expected in return. It's a transfer payment. Okay, सब्सिडीज, पेंशन, स्कॉलरशिप देते टाइम सरकार आपसे वापस कुछ अपेक्षा नहीं रखती कि आप कुछ देंगे। अब इन सबको गवर्नमेंट अपनी मर्जी से मैनेज कर पाए, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, जो हमारे बजट के थ्रू नजर आती है। अभी रिसेंटली 2022-23 का बजट निर्मला सीतारमन ने दिया 1 फरवरी के अंदर, या तो अब उसके अंदर भी ये रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स की ही बात होती है। It is given under the annual financial statement of the government in India. We call it annual financial statement, okay, or the budget. अब इसको सरकार अपनी मर्जी से तय करे, इससे फायदा क्या होगा? मैंने आपको एक साइकिल की बात की थी जब हम इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस भी कर रहे थे। तो हम ये कहते हैं कि देश के अंदर जितनी अभी नेशनल इनकम है, सारी राष्ट्र की आमदन, अगर ये ज्यादा होगी तो पर कैपिटा इनकम्स भी ज्यादा होंगी, मतलब एक आदमी की इनकम भी ज्यादा होगी, ठीक है? अगर एक आदमी की इनकम ज्यादा होगी तो फिर वो सेव भी कर पाएगा। अगर वो सेव कर पाएगा तो इस सेविंग में से कुछ पैसा वो इन्वेस्ट भी कर पाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो ओवरऑल बिजनेस बढ़ेगा और सरकार की आमदन या राष्ट्रीय आमदन बढ़ेगी, ठीक है? तो दिस इज द सिचुएशन। बट नाउ in case something happens and we are not able to maintain this cycle, let's say कोविड के टाइम पे अब लोगों की जितनी सेविंग्स थी वो खत्म हो गई, इनकम्स आनी बंद हो गई, तो फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ से आए? बहुत सारी कंपनीज में तो लॉकडाउन ही चला। तो अब गवर्नमेंट अगर बोरो करके और इन्वेस्टमेंट खुद से करना शुरू करे कुछ एरियाज के अंदर, तो देन इट विल हेल्प बूस्ट that area of the economy, help create more employment, that will revive the demand, that will revive the supply, and that will revive investment, and then more and more economic growth can happen. तो एक तरह से इकोनॉमी को पंप प्राइम करना पड़ेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। पंप प्राइम का क्या मतलब? कभी आपने हैंड पंप से पानी पिया हो, या कभी मोटर से जब हम नीचे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें ना थोड़ा सा पानी डाल के एक वैक्यूम सा बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर नीचे से पानी अपने आप आता रहता है। छोटे होते कभी एक्सपेरिमेंट किया ऐसे, पाइप मुंह में डाल के पानी निकाल लिया, थोड़ा सा सक कर लिया, फिर उसको नीचे कर देते हैं हम, फिर पानी आता रहता है अपने आप, या सो दैट इज कॉल्ड पंप प्राइमिंग। इकोनॉमी में पंप प्राइमिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट एक बार
थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके इकोनॉमी को किक स्टार्ट कर देती है। वो नेगेटिव जारी होती है तो उसका एक बार रुख मोड़ देगी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव कर देगी, बाद में इकोनॉमी अपने आप चलती रहती है। समझ आया? दैट इज पंप प्राइमिंग। तो इस साल जो आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये सब आपको बजट के अंदर भारी भरकम शब्द देखने को मिले, उसके अंदर गवर्नमेंट कर यही रही है, फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस मींस that the government has started investing in the economy and trying to stimulate the economic growth, which is otherwise going negative. That kind of situation the government is trying to create. यही सब जॉन मिनट कीन्स ने 1928 के ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे भी सजेस्ट किया। इंडिया के अंदर जो आज आपको कोविड-19 पैंडेमिक के बाद देखने को मिल रहा है, जो गवर्नमेंट कर रही है, अलग अलग प्रोग्राम, 20 लाख करोड़ के आसपास का आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम, है ना, ये सब जो इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट खुद कर रही है, दिस इज ऑल्सो द फिस्कल स्टिमुलस, दिस इज द पार्ट ऑफ डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसके थ्रू सरकार कर्जा लेके एक बार अभी इन्वेस्ट करके एक तरह से आपको धक्का मारने की कोशिश कर रही है कि चलो चलो हम तुम्हारे साथ हैं। फिर धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, फिर अपने आप डिमांड एंड इकोनॉमी एंड दी एवरीथिंग स्टार्ट्स पॉजिटिवली। ओके, यहां तक समझ आया? Yes, sir. द एंटायर मैप। अब ये जो हमने दो एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, ये दो डायमेंशंस में काम करते हैं। एक तरफ तो है कैपिटलिस्ट्स और एक तरफ है सोशलिस्ट्स, अगर इसकी मैं एक्सट्रीम देखूं, और इन दोनों का मिक्स्ड, दोनों की अगर बोला जाए तो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड, दोनों ही एलिमेंट्स ले लिए जाए तो दिस इज नाउ द टाइप ऑफ इकोनॉमिक मॉडल जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे अब पहुंच रहे हैं। तो इकोनॉमिक मॉडल तीन तरह के हुए हमारे पास, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। ठीक है, सो गिव अ हेडिंग, मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी। मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी। So there are essentially three models of economy. One extreme is capitalist, other extreme is socialist, and in between is mixed. Okay, so you can put it on a line, they are like this. Okay, so let's first try and understand what is a capitalist economy. What is a capitalist economy? पूंजीवादी इकोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजीवाद, मतलब सर ये अर्थशास्त्र बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। हाँ, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। ओके, तो कैपिटलिस्ट इज पूंजीवादी और सोशलिस्ट इज समाजवादी। ओके, so what is a capitalist economy and how this particular model looks like? Let's see. Okay. So capitalism is thought of as an economic system in which the private sector owns and controls property. The private sector owns and controls property in accordance with their own interest, and utilizes the capital according to the demand and supply, dynamics of the economy, demand and supply dynamics of the economy. ठीक है, तो ये तरीका है हमारे ओवरऑल सिस्टम का काम करने का कैपिटलिस्ट के अंदर। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिखिए। Some of the basic characteristics of capitalism include, some of the basic
characteristics of capitalism include private property rights, private property rights. Okay. Second, contracts between private parties, contracts between private parties. Third, minimum intervention by the government, minimum intervention by the government. Fourth, profit orientation, profit orientation. Fifth, it will be enough, इतने areas बहुत हैं. Okay, आगे लिखिए. Now here is one aspect that I can give you about capitalism. Ownership of means of production कैसे हैं? Private. Okay. Economic motive क्या है? Profit. Solution of central problems, हर चीज के लिए किसको solution माना जाता है? एक free market system. गवर्नमेंट ध्यान ना दे, बीच में परेशान ना करे. गवर्नमेंट का रोल क्या होगा? सिर्फ रेगुलेशन. Income distribution will always be unequal, and nature of enterprise will always be private. Economic freedom will be complete, and major problem will be inequality. तो आगे ये वाले एस्पेक्ट जो अब इसमें से बच गए हैं वो लिखने. लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. In capitalist economy, in a capitalist economy, free market system is considered as a solution. Free market system is considered as a solution to all the problems of the economy. Free market system is considered as a solution to all the problems of the economy, while government has a minimal regulatory role. While the government has a minimal regulatory role. तो परेशान मत करो, मार्केट को अपने हिसाब से अपना काम करने दो, वो बहुत अकलमंद है अपना काम करने के लिए. ठीक है. That is, there is complete freedom to the market. That is, there is complete freedom to the market. However, in such a system, since those owning the capital or the capitalists will have better opportunities for investment, negotiation, bargaining, and trade. Therefore, it will give rise to increasing income inequality. It will give rise to increasing income inequality. Okay. So major trouble in a capitalist economy is income inequality, or it is unequal. Then comes the socialist economy. So in a socialist economy, the means of production and distribution are owned by the state or government. In a socialist economy, the means of production and distribution are owned by the state or government. Okay. The major motive is social welfare. The major motive is social welfare. There is no
और लिमिटेड, या तो होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो बहुत कम, नो और लिमिटेड राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो और लिमिटेड राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, and the economic problems are solved through centralized planning. Economic problems are solved through centralized planning and a direct implementation of the plan by the government itself. Centralized planning भी government करेगा, implement भी खुद ही करेगा. Direct implementation of the plan by the government itself, which leads to its involvement in every sphere of economy. Which leads to its involvement in every sphere of economy. तो गवर्नमेंट हर लेवल पे इन्वॉल्व रहेगा, चाहे वो ब्रेड बनाना है, चाहे वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, चाहे हॉस्पिटल में किसी का इलाज करना है, एवरीथिंग एवरीवेयर इज गवर्नमेंट. Then the income distribution is equal, but since the economy operates through a large and complex government organization, क्योंकि इतना बड़ी गवर्नमेंट हो जाएगी, फिर वो अपने आप को चलाना ही सरकार को मुश्किल हो जाएगा. Since the economy operates through large and complex government organization, it creates inefficiency. It creates inefficiency. Moreover, since the government enterprises work through monopoly, private तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट है. Work through monopoly, that is, there is no competition or performance evaluation in a comparative manner. Works through monopoly, comma, there is no competition or performance evaluation in a comparative manner. कि इसके हिसाब से आप कितने में दे रहे हैं. This leads to more inefficiency. जो आपको पता है कोई और तो है नहीं, मुझे ही करना है, तो फिर ये गवर्नमेंट के अंदर इनएफिशिएंसी भी लाता है. और उनको कोई परफॉर्मेंस करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बजट के थ्रू काम चल रहा है. कोई कमाई के बेसिस पे तो उनकी सैलरी नहीं आ रही कि लेट्स से कोल इंडिया लिमिटेड कितना कमाएगा, इसी के हिसाब से उसके एम्प्लॉयज को सैलरी मिलेगी. ऐसा कुछ नहीं है. उनकी सैलरी गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड है और गवर्नमेंट के बजट के थ्रू वो सैलरी आनी है, चाहे कोल इंडिया लिमिटेड घाटे में जाए चाहे फायदे में जाए. ये सिचुएशन है. तो परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान वैसे ही नहीं रहेगा कि हमारी सैलरी तो फिक्स्ड है, उतनी आनी है, ज्यादा करके क्या फायदा, कोई मोटिवेशन नहीं. लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइजेस में क्या होता है कि भाई अगर कंपनी कमाएगी तो सबको बोनस मिलेगा, है ना, इस तरह से एक मोटिवेशन रहेगा. सो दैट्स दैट. So therefore, this is the situation. And obviously now, since everything is government, there is nothing private. So there is a lack of freedom also. Okay. Under socialism, there is also a lack of economic freedom. Lack of economic freedom. ठीक है. अब अगर मुझे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की आइडियल एग्जांपल लेनी हो तो दैट इज यूएसए, और सोशलिस्ट की आइडियल एग्जांपल लेनी हो तो इट इज अर्स्टवाइल यूएसएसआर. अब तो यूएसएसआर 1991 में डिसॉल्व हो गया, तो आज तो ऐसी कोई प्योर एग्जांपल हमारे पास सोशलिज्म की नहीं है, लेकिन बैक इन द डे जैसा यूएसएसआर था वो इस तरह से चलता था, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी. देन इज मिक्स्ड इकोनॉमी और मिक्सडिज्म. सो this is basically a mixture of two. It combines the best of both worlds. That is called a mixed economy. So, okay, a mixed economy combines the best of both capitalist and socialist systems. Both capitalist and socialist systems. Okay. तो मोटिव के लेवल पे ले लें, काम करने के तरीके पे ले लें, प्रॉब्लम्स में ले लें, अच्छाइयां बुराइयां भी मिक्स्ड हैं. ठीक है, जैसे इनइक्वालिटी और इनएफिशिएंसी भी है,
लेकिन साथ ही साथ वेलफेयर मोटिव भी है, प्रॉफिट मोटिव भी है, दोनों चल रहा है। एंड इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, लिख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी working on the ideology of democratic socialism given by the first prime minister Jawaharlal Nehru. हमारी जो ideology है, that is called democratic socialism, given by the prime minister or first prime minister Jawaharlal Nehru, under which अभी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर क्या होता है, लिखिए, अंडर विच both public and private sector work hand in hand, both public and private sector work hand in hand to ensure social welfare, as well as the profit motive, social welfare as well as the profit motive. Now let me show you how these economies are actually. So here it is. This is pure competition. That means it's a free market economy. So economies like USA and Japan, they are the pure competition based economies. Then जिनकी capitalist towards leaning ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा मिक्स्ड है, लेकिन टुवर्ड्स कैपिटलिज्म ज्यादा है, दे आर लाइक फ्रांस एंड स्वीडन. जो सोशलिस्ट की तरफ लीनिंग ज्यादा है तो मिक्स्ड, लेकिन टुवर्ड्स सोशलिज्म ज्यादा जाता है, दैट इज चाइना एंड वेनेजुएला. जिसमें थोड़ा सा कम्युनिज्म और ज्यादा है, सो दैट इज नॉर्थ कोरिया. आज की डेट में सबसे ज्यादा कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट जो चल रही है, दैट इज द नॉर्थ कोरियन इकोनॉमी. इसके अलावा जो एक्सट्रीम केस सिनेरियो था, दैट इज यूएसएसआर, दैट डज नॉट एग्जिस्ट टुडे. ओके, अंडरस्टूड? So please draw this also. Economic systems, center में लिखो mixed, pure competition, communism. This is a centrally planned economy, the free market economy, and then North Korea, China, France, USA. बस ये 4 कंट्रीज का वर्कआउट लिख लो. नॉर्थ कोरिया, चाइना, फ्रांस एंड यूएसए. हो गया? ठीक है, समझ आया? ओके, सो नेक्स्ट देयर आर सर्टेन concepts in the economy that we need to go through. तो कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमी के अंदर? एक तो स्टॉक हम टर्म यूज करते हैं, और एक टर्म यूज करते हैं फ्लो. दो तरह के वेरिएबल्स हैं जिनके थ्रू इकोनॉमी चेक होती है कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, भाई बताओ, है ना? जैसे आप किसी दोस्त से मिलते हो तो उससे पूछते हो, हाँ भाई काम कैसा चल रहा है, अगर वो बिजनेसमैन है. तो वो काम कैसा चल रहा है इसको बताने के लिए जो वो वेरिएबल यूज कर रहा है, नोइंगली और अननोइंगली, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स. वन आर स्टॉक एंड अदर आर फ्लो वेरिएबल्स. स्टॉक वेरिएबल उनको बोलते हैं जो एक तरह से सीमित हैं, वहीं के वहीं रहते, और ज्यादा उसके अंदर चेंज नहीं आता. एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कैसे हैं उस हिसाब से पता चलेगा कि लेट्स से आज मेरी जेब में अभी कितना पैसा है, दिस इज अ स्टॉक वेरिएबल. अभी हमारे गोदाम में कितना अनाज पड़ा है, दिस इज अ स्टॉक वेरिएबल. ठीक है, इंडिया के पास कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आज की डेट में हैं, दिस इज अ स्टॉक वेरिएबल. ओके, बैंक के पास कितना कैपिटल है, मार्केट में बेरोजगारी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, दिस इज अ स्टॉक वेरिएबल. सो बेसिकली it is measuring something at a point of time, that is called a stock variable. दूसरा है फ्लो. फ्लो क्या है? हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बात करते हैं कि पिछले 1 साल में मैंने इतने का बिजनेस किया, इतने का इंपोर्ट किया, इतना एक्सपोर्ट किया, इतना खर्च कर दिया खाने पीने पे, घूमने फिरने में, पहनने में, है ना?
या मैंने इतनी गाड़ियां बनाई, या मैंने इतने जूते बनाए, या ब्रेड बनाई, या ये बना के बेचा. All these things, production, investment, export, consumption, national income over a period of time, that is called a flow variable. ऐसे ही बताएगा ना कोई बिजनेस के बारे में. सपोज मैं आज आपको आपके बिजनेस के बारे में पूछूं, चिन्मय आज तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो व्हाट विल चिन्मय से? जैसे सर मैंने ये पढ़ लिया, अभी तक मुझे ये समझ आया, ये मेरे सर के ऊपर से गया, इस चीज के मेरे ये नोट्स सैंक्टिफाई हो गए, करंट अफेयर्स में मुझे ये कर लिया. सो ही इज ऑल्सो टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स. What he has right now, that is his stock. Over a period of time, what he is giving me as a picture is a flow. Same thing is there in the economy also. Stock variables, flow variables. Did you understand? लिखें. Yes, sir. लिखिए stock variables and flow variables. So let me show you the screen again. Okay. So stock refers to a quantity of a commodity measured at a point of time. Quantity of a commodity measured at a point of time. अभी कितना है? Okay. So, for example, foreign exchange reserves, capital, unemployment level, etc. Macro जो word लिखा है ना, macro economy. So that means at a bigger picture. Micro economy, smaller picture. Macro means at the level of entire economy. Micro may be one company, one person. Okay. Now flow variables. So flow variables are measured over a period of time. Not at a point of time, over a period of time. Let's say 1 year. अब जैसे महंगाई है, तो हम हमेशा ये बोलते हैं ना, भाई हमारे दादाजी के जमाने में तो ये चीज 1 रुपए की आती थी, अभी लाख रुपए की आती. तो हम एक कंपैरेटिव टाइम जोन में बात कर रहे हैं, है ना. So compared to something, so that means महंगाई भी एक फ्लो वेरिएबल है. इन्फ्लेशन इज अ फ्लो वेरिएबल. या नेशनल इनकम, मेरे टाइम पे राष्ट्रीय आमदन इतनी थी, तुम्हारे टाइम पे इतनी है. या मेरी आमदन पर्सनल इनकम इवन, so that is also a flow variable. I used to earn this much back in the day, today I earn this much. This is also a flow variable. So national income, personal income, imports, because हम क्या बोलेंगे, पिछले 1 साल में इंडिया ने इतना इंपोर्ट किया, like this. Yeah, imports, export, consumption, production, all of these are examples of flow variables. Understood? Clearly written? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अब हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स किस तरह से होते हैं. सेक्टर या इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो कंसर्न है, वो पहले थोड़ा सा बेसिक लेवल पे समझते हैं. देखिए, हर इकोनॉमी जो है वो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के सिर पे खड़ी है. कोई एक बंदा कोई चीज बनाएगा और उसको सप्लाई करेगा, और वही बंदा शायद मार्केट में जाके किसी चीज की डिमांड भी करेगा. फॉर एग्जाम्पल मी, आई एम प्रोड्यूसिंग एजुकेशनल सर्विसेज, and the money that I earn out of providing these educational services, I will use that money to create various kinds of demands. For example, the internet connection, for example, the food, for example, the housing, the car, or something like that. So every person is giving some kind of supply and creating various kinds of demands. That's how the economy works. So now you have at the back of your mind what is the meaning of concepts of demand and supply also. Yes or no? So what is demand? It is something that you will seek from the market. Supply is what you will provide to the market. Yes or no? So लिख लीजिए, demand is what you seek from market, and supply is what you provide to the market. Okay, so that is demand and supply. But in economy we study it something differently. We study something called law of demand. This is the next topic that we're dealing with, law of demand. What is the meaning of this law of demand, and what does it say? It says, okay,
all other things remaining constant, all other things remaining constant, comma, with increase in prices, with increase in prices of a good or a service, a good or a service, comma, its demand will decrease. Its demand will decrease. Okay. अगर किसी चीज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और सारी चीजें सेम रहें, और सारी चीजें सेम रहने का मतलब क्या है? पर्सनल इनकम सेम रहे, मार्केट कंडीशन सेम रहे, है ना? तो ये सारी चीजें सेम रहेंगी, तो क्या होगा? आपकी इकोनॉमी के अंदर एसेंशियली जो डिमांड है वो कम हो जाएगी विद द इंक्रीजिंग प्राइसेस. सो दिस इज द सिचुएशन दैट विल हैपन विद इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी. ठीक है. अब ये जो डिमांड है ये इस तरह से स्लैकन करेगी, इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही है, आप अफोर्डेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी. लेट्स से गोल्ड की बात अगर करें तो बैक इन द डे आम घरों में किलो के हिसाब से सोना हुआ करता था, और शादी ब्याह में भी किलो के हिसाब से डलता था, क्योंकि गोल्ड बहुत सस्ता था. इट वाज नॉट अ बिग डील. टुडे इट हैज गॉन वेरी कॉस्टली, so it is a prized possession like anything. Back in the day also women loved it, today they love it even more, but their husbands, they think कि भाई अभी खर्च करना पड़ेगा. और even the women who are self earning, उनको भी ये लगता है कि मैं 50,000 का एक छोटा सा गोल्ड का कुछ लेके आऊंगी, अच्छा एक बढ़िया फोन ले लें, ज्यादा यूटिलिटी है. Things like this. So now because the price are increasing, so there is going to be some change in the consumer behavior or the attitude of the person creating demand. So this is the scenario here. If I have to represent this on a curve, then if I put it like this, let's say this is the price on this side, and then there is the quantity on this side. So with increase in prices, the quantity demanded will decrease. How should I put it? What kind of curve it will be? It will be something like this. Downward. This is the kind of curve that will happen. At a very high price, the quantity demanded will be very less. Let's say this is 1 and this is 100. Okay. At a low price, the quantity demanded will be more. Okay. So let's say this is 10 and this is 50. Like this. So that is the kind of relationship that we can call. And this particular relationship is called as demand curve. Properly.
Okay, am I audible? Yes, sir. Where did you lose me? Yes. Sir, it was, I think it was last was demand curve. Okay. Yes, sir, demand. So did you listen to the personal income, consumer preference or anything like that? No, sir. No, sir. ओह तेरी, मैं खुद को ही पढ़ा रहा था. Okay, चलो ये चकमा दे गया आज. खैर, now I was talking about what kind of things should remain constant in this equation. Okay, so एक तो पर्सनल इनकम कांस्टेंट रहना चाहिए, फिर कंज्यूमर प्रेफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, प्राइसेस ऑफ द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव कांस्टेंट रहना चाहिए और मार्केट कंडीशंस कांस्टेंट रहना चाहिए. ये तीन चीजें कांस्टेंट रहना बहुत जरूरी है. कैसे? पर्सनल इनकम का एग्जांपल मैं ये लेता हूं, अगर लेट्स से मार्केट में महंगाई उतनी जल्दी नहीं बढ़ रहा जितनी जल्दी आपकी पर्सनल इनकम बढ़ रही है, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइसेस से. लेट्स से कोई चीज 10 रुपए से 20 रुपए हुई, लेकिन आपकी इनकम 100 रुपए से लाख रुपया हो गई, तो देन इट हार्डली बॉदर्स यू. Then it's the matter of consumer preferences. Let's say by the time you were going to buy it, your preference should also remain the same. It should not change. Yeah, because in case your preference changes, then the supply demand equation जो हम पढ़ते होते हैं ना, price is directly proportional to demand over supply, ये change हो जाएगा. Because if your preference changes, demand goes down and therefore the prices also go down. फिर ये law नहीं stand करता. Then the price of the second best alternative. Let's say there is diamond jewelry and gold jewelry. So that should also remain constant. If let's say for some reason the price of diamond jewelry falls, let's say the lab grown diamonds are used, then in that case also what will happen is there can be a switch in demand. So this demand curve will not work. Then there are market conditions. So market conditions means let's say पहले audio CD players आते थे, अब एकदम से आने बंद हो गए. क्यों? क्योंकि अब वो टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो गया. तो उसकी वजह से म्यूजिक वर्ल्ड और इस तरह की पहले दुकानें होती है जहां से जाके लोग ऑडियो सीडीज या MP3s खरीदते थे. अभी वो जमाने गए. नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज मे बी थ्रू अ USB स्टिक मैक्सिमम, वो बची हुई एक, है ना. सो अब वो पूरा मार्केट कंडीशन ही चेंज हो गया उसके केस में. तो ऐसे चीजों में डिमांड कब नहीं खड़ा होगा, फिर ये डिमांड लॉ अप्लाई नहीं होता. ठीक है, यहां तक समझ आया? Yes, sir. ओके, नाउ एक चीज यहाँ पे और देखने की जरूरत है. एवरीथिंग इन द डिमांड कर्व इज अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर. ऐसा नो, और द वन हु इज क्रिएटिंग द डिमांड. उसी की बात हो रही है ना सारी, और तो किसी की बात नहीं कि हम ये चीज का ध्यान रखना. क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई में एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूसर और सप्लायर. तो नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सप्लाई. ये क्या बोलता है देखिए. So it states that all other things remaining constant, all other things remaining constant, comma, the supplier would want to supply more with increase in prices. Increase in prices. ऑब्वियस नहीं लगता थोड़ा सा? मैं कोई चीज बना रहा हूं और मुझे लगता है कि ये महंगी बिक सकती है, तो मैं तो वो और बनाने की कोशिश करूंगा. अब आज की डेट में एप्पल आईफोन बना रहा है, तो आईफोन 13 या 14 उसको लगता है कि महंगा बिक सकता है, तो वो ज्यादा एनर्जी इनको बनाने में लगाएगा. वो क्यों पुराने 10, 11, 12 बनाने में एनर्जी लगाएगा? ऑब्वियस है ना. मारुति को लगता है कि वो अगर डिजायर बनाए तो ज्यादा फायदे में है, तो वो 800 क्यों बनाएगी? So something that can be sold at a higher price in the market, the supplier would want to supply more of it. All other things, ये जो ऊपर हमने other things लिखे हैं, the same other things remaining constant.
ठीक है, अब इसका अगर हम कर्व बनाएंगे तो कैसे बनेगा? सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. So here also, what is happening? As the prices are going up, so the supply quantity supplied is also going up. So this is a demand curve and this is the supply curve. It is a upward going curve. And the point at which they intersect each other, this is called the equilibrium point. Equilibrium point. That's the point where demand is equal to supply within the economy. So likhiye next, equilibrium. Equilibrium. ये बना लिया कर्व, सप्लाई कर्व. इसी के अंदर बना लो चाहे अलग इनकी यूज करके. सो दिस इज द सप्लाई कर्व, ऊपर को जाता हुआ. ठीक है, सो द पॉइंट एट विच दे इंटरसेक्ट, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट. So what is an equilibrium point? So it is a situation within the economy in which demand is equal to supply. Demand is equal to supply. That means वही चीजें बन रही हैं जिनकी डिमांड है, वही सप्लाई होके भी आ रही हैं. जितनी बन रही हैं उतनी ही डिमांड है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. This is called equilibrium within the economy. This is a sort of an ideal situation for the economy to be in. इस ideal situation पे what will happen is prices will become stable. Prices will become stable. क्यों? If price is directly proportional to demand over supply, then this cancel each other out. So prices will become stable. Yes or no? Hello, hello. Yes, sir. Yes, sir. So that's the situation that we are entering here. Ideal situation. But this ideal situation is never there in the economy. We always want economic growth. हम साधु लोग नहीं हैं कि 2 रोटियां आ रही हैं, खा रहे हैं बस मस्त और कुछ नहीं चाहिए. ऐसा नहीं है. We want growth. हमें कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए ही लाइफ में. पता नहीं, साधुओं को भी एक्स्ट्रा मोक्ष प्राप्ति चाहिए. जितना है उतने से संतुष्ट नहीं है ना. सो इस केस में अभी क्या होगा? You will keep doing something more. You will keep doing some kind of nonsense. So because of that, there will be either a demand-driven or a supply-driven economic aspect that will happen. If it is a demand-driven economy, then the growth is a possibility. आप देखिए, चीजें मार्केट में बना के रखना एक सप्लायर का काम है, लेकिन उनको खरीदने कोई आएगा या नहीं, ये कोई पक्का थोड़ी होता है. Let's say, like me, there might be 10 institutions who want to teach or 10 people who want to teach. But do the students want to learn from them or students know that they are teaching or not is a separate question. So because of this, supplier तो supply कर रहा है, लेकिन demand आ रहा है या नहीं, ये सबसे important चीज है और ये drive करता है economy को. लेकिन हमेशा से economy में इस तरह की सोच नहीं थी. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो 1928 से पहले, ये ग्रेट डिप्रेशन से पहले, जब तक उन्होंने सही पिक्चर नहीं देखी, तब तक उनको लगता था कि एवरी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. आप बस चीजें बना के मार्केट में भेजिए, कोई ना कोई तो खरीदने आ ही जाएगा. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सेज लॉ ऑफ सप्लाई. लिख लीजिए. प्रायर टू द ग्रेट डिप्रेशन, prior to the Great Depression in USA, the liberal economists and capitalists sided with the Say's law of supply. SAY apostrophe S. Say's law of supply. Sir, repeat करना. Prior to the Great Depression, the liberal economists, जो एडम स्मिथ जैसे थे, जो बोलते थे मार्केट को करने दो अपनी मर्जी, liberal economists and capitalists believed in Say's law of supply. SAY apostrophe S. Say's law of supply, which advocated that every supply creates its own demand. Every supply creates or created its own demand.
But after Great Depression, the economic thinking changed towards demand-driven economy. The economic thinking changed towards demand-driven economy. कि अगर कोई खरीदने ही नहीं आया, तुम बना के क्या कर लोगे? तो सिर्फ बना के रखते जाने से डिमांड आ जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ये इस चीज का शॉक जब लगा तब पता चला। So this was the situation. So now you know one more thing, that is Say's law of supply. तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे इकोनॉमी के अंदर। अब मुझे ये बताइए कि यहां तक इकोनॉमी कैसी लगी? आसान है, मुश्किल है? It is interesting. It is interesting. बोरिंग नहीं है। बोरिंग नहीं है, समझ आ रही है? Yes, सारी sir. इकोनॉमी ऐसी ही है। और मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे रहेगा कि चीजें तो बहुत टेक्निकल हैं, लेकिन आपको वो पढ़ाऊंगा जो यूपीएससी में आएगा, और ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि ये तो रोज की बातें हैं। ठीक है, चलिए, जस्ट लाइक वी स्टडीड ज्योग्राफी, सो दैट्स आल्सो वेरी टेक्निकल, बट दैट्स हाउ वी हैव टू स्टडी इट। चलिए, थैंक यू सो मच।